Hello children, how are you? So I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों एक बात बताओ, ऑनलाइन स्टडीज करने में मज़ा तो बहुत आता है ना? उसके साथ साथ क्या आपने नोटिस किया है कि धीरे धीरे आपके इंग्लिश के स्किल्स कितने इम्प्रूव हो रहे हैं? बिकॉज यू आर लिसनिंग टू समथिंग कंटिन्यूसली, और जब भी आपका मन करता है तब आप उसको वापस से रिवाइंड करके फिर से प्ले करके यू आर एबल टू हियर इट. सो दोज आर द प्रिविलेजेस विच यू हैव, especially for those children who really feel shy to ask any questions in the class. For them, online studies are like an added advantage, isn't it? So बच्चों, अब तक हमने इंग्लिश में जो भी पढ़ा है उसकी वजह से you have learned a lot of moral lessons, isn't it? और you know how to communicate with people, deal with people, at the same time how to handle the nature and be thankful to whatever you have. है ना? So बच्चों एक बात बताओ, do you know who I am? Yes, some of you definitely know who I am because you have been learning from me right from your early days, isn't it? But ऐसे भी बच्चे हैं जो daily basis पे हमारे साथ जुड़ जाते. So for them, let me introduce myself. My name is I am Bhagyashri Shibu and I am your English teacher. So बच्चों, in today's chapter, what we are going to do is we are going to thank someone. हम किसी को thank you कहने वाले हैं. We are going to talk about something that is very important in our life. Okay? It plays a major role in our day-to-day basis. कौन है वो? That's right, we are talking about the sun god. So बच्चों, can you imagine a life with the darkness around? Yes, sometimes it feels good when it is dark, when it is gloomy, and when it is raining. But otherwise, when the sun doesn't come out, okay, in the evenings, when you can bear the darkness for few hours, but can you stay without light? No. So हमारी धरती पे light कौन provide करता है? That's right, it's the sun. So let's look at this poem, which is the hymn to the sun. All right? So before we start, okay, let's do a quick warm up. Okay? So आपको बताना है what is the importance of the sun. Okay, by now you all are grown ups. I'm sure you all are in the 8th standard now. और सारे बच्चे you guys are all grown up. So आपको पता है कि why sun is important. Because without sun, okay, there is no life possible. है ना? Sun provides us with light. At the same time, आपको पता है, plants, they make their food in the presence of sunlight. Okay? इसकी वजह से we are able to get the different plants, and we all know that human beings are interdependent on sun. Okay. Now, how is the earth related to the sun? अब earth और sun का connection क्या है? Why is it so important? Okay, mainly for life on earth. All right, now you have to provide the following information about the sun: size, distance from the earth, gases present, and speed of sun rays. Okay, so बच्चों, ये सारी information you have to find out and you have to share it with others. All right, now let's begin with the synopsis of what this poem is based on and what does the poet want to tell us. Alright, so this poem is actually taken from the Fakir of Jangira, a metrical tale and other poems. The poem praises and glorifies the sun, which is addressed as the sun god of Hindu mythology. हम सबको पता है कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वी वर्शिप सन गॉड. हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं एंड वी ग्लोरीफाई हिम.
Okay, so this poem is taken from the Fakir of Jangira, a metrical tale and other poems. So इस book से इसको adapt किया. Alright, now let's begin our beautiful poem and let's thank God. Alright, God of this beauteous world, whom earth and heaven adore in concert and in concert love, whose praise is hymned by the eternal seven, bright wheeling minstrels of the courts above. So यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि God of this beauteous, beauteous मतलब beautiful world, okay, whom earth and heaven adore in concert, मतलब earth and heaven, धरती के लोग at the same time heavenly bodies also, heaven also इसकी praise करते हैं, okay, they glorify him, they glorify the sun God, okay, and with lots of love, बहुत सारा प्यार देते सूर्य देवता को, they glorify him and we always adore this, adore मतलब worship करना, this sun God, whose praise is hymned by the eternal seven, bright wheeling minstrels of the courts above. So यहाँ पे ये जो हम बात करें seven bright wheeling minstrels, this is ये जो सूर्य देवता का जो रथ है, okay, चैरियट जो होता है, रथ जो होता है 7 घोड़ों वाला, उसकी बात हो रही है, ओके, जिसको सब जगह से प्रेजेस मिल रहे हैं व्हेन ही इज गोइंग ऑन द, जो वो अपने रथ पे जाते हैं, ओके. नाउ गॉड ऑफ दिस ग्लोरियस यूनिवर्स, द सी smiles in thy glance and gladdens in thy rays, and lifteth up its voice in praise to thee, giver of good, creator of the day. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गॉड ऑफ दिस ग्लोरियस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के जो रचनाकार है, जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है, ओके, उस देवता की पूजा हो रही है. वो हम ये भी कह रहे हैं, द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट जो सी है, जो समुंदर है, ओके, वो भी सूरज के आते ही स्माइल करना शुरू कर देता है. इफ यू लुक एट द सी, ओके, इट स्टार्ट्स स्माइलिंग, इट स्टार्ट्स dazzling, ओके, विद द सन रेज फॉलिंग ऑन इट. एक अलग ही शाइन आती है उस पे, ओके, जो वेव्स आती है, ओके. there are as we all know, there are high tides, there are low tides, it all depends on the movement of the sun also, okay. So it says, when the line which says and lifteth up its voice in praise to thee, मतलब जो waves से जो sound आती है, okay, it is like, you know, it's moving so smoothly, it's thanking God, it's being happy and joyful, okay, giver of good, creator of the day, because सूरज की वजह से हम दिन देख पाते हैं, वरना धरती पे क्या होता अगर सूरज नहीं होता, अंधेरा होता, okay. The day starts जब sun comes out, isn't it? So that is what the poet is trying to say. He is the giver of the good things on earth. He is the creator of day, okay. God of the immortal mind, with power to scan thought like diamonds in the cavern lie, though deeply bedded in the breast of man, distinct and naked to thy piercing eye. So यहाँ पे हम कह रहे he is the God of immortal mind. हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती रहती हैं, it is like, you know, with power to scan, we are able to analyze things. हम चीज़ें देख सकते हैं, हम चीज़ों को analyze कर सकते हैं because of the sun, because of the light which is there. अगर सब जगह पे अंधेरा होगा, हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, तो आपको लगता है कि हमारे thought processes सही जाएंगे? नहीं, okay? So thought that like diamonds in the cavern lie, diamonds in the cavern मतलब जो केव के अंदर जो ट्रेजर होता है, जिसमें डायमंड्स होते हैं, कैसे शाइन करते, okay, the way they glow, that is what the poet is trying to compare our mind with, okay, saying that our mind glows, our thought process changes, we have lot of ideas igniting हमारे mind को, okay. So though deeply bedded in the breast of man, so हमारे दिमाग में हमारे you know whatever thoughts are there, जो हम अपने अंदर छुपा के रखते, वो धीरे धीरे बाहर आते, our ideas come out, we feel bright and fresh. आप imagine करो कोई gloomy day है,
तो आपको कैसे फील होता है? यू फील वेरी सैड, यू फील वेरी लो. बट जब सन कम्स आउट आपको कैसे फील होता है? यू फील एनर्जेटिक, बिकॉज सन प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, इजंट इट? सो दैट इज द रीजन वाई हमारे थॉट्स को भी एक बढ़ावा मिलता है. वी आर एबल टू थिंक इन अ प्रॉपर वे. ओके, सो God of eternity, whose golden throne is borne upon the wings of angels bright, God of all goodness, thou art God alone, circled with glory, diademed with light. So यहाँ पे we are saying God of eternity, मतलब God is present everywhere, sun is present everywhere. Okay, although it is dark in some areas because of night, but there are certain other areas which are bright because of the sun. Even the moon gives us light because of whom? Moon किसकी वजह से light देता है? Because of sun, because he's getting the light from the sun, right? So we are talking about God of eternity, whose golden throne because sun is yellow, is golden color. Okay, so what he has a golden throne also. Throne is that seat जिसपे सूर्य देवता बैठते हैं, उनका सिंहासन. Okay, is borne upon the wings of angels bright. Okay, जो angels भी है उनके आसपास. Okay, it is like they all are praising him. God of all goodness, thou art God alone. So we are saying he is the God of all goodness. जो भी अच्छाई है, ओके, जो भी अच्छी चीज़ें आस पास हो रही है, सब चीज़ें के लिए गॉड इज द इटर्नल वन. ओके, ही इज द ऑलमाइटी, सर्कल्ड विथ ग्लोरी, डाइडम्ड विथ लाइट. मतलब अगर आप देखोगे सूरज के हम जब फोटो भी बनाते, ओके, जब हम इमेजिन व्हेन यू हैव, आपको एक सीनरी ड्रॉ करनी है, तो आप हमेशा सूरज को जब निकालते हो तो क्या करते हो? एक स्माइली फेस बनाते हो, isn't it? So that's like the circle with glory, because we glorify him. Okay, we know that he spreads smile, his light, okay, that he has, उसकी वजह से हमारी जिंदगी भी bright हो जाती है. Okay, thou lookst from thy pavilion, and each cloud like fear overcome by hope triumphant flies. The angry thunder's voice, though raving loud, at thy bright presence into silence dies. So जब सूरज ऊपर से आसमान से सबको देख रहा है, ओके, तभी उसके डर से जो क्लाउड्स है वो भी भाग जाते हैं. ओके, सो इट्स लाइक दोस क्लाउड्स आर लाइक फियर. हमारे मन में जो डर होता है, ओके, दोज आर लाइक क्लाउड्स. बट as soon as we come in the presence of sun, okay, हमारा जो thought process है वो change हो जाता है. we feel bright, we feel energetic. so इसकी वजह से it is just a comparison हो रहा है यहाँ पे, how the clouds are there, okay, but जब सूरज बाहर आता है, जो clouds इतना शोर करते हैं, इतना थंडर करते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं. okay, they also calm down, they also are silent. So have you ever seen that कि कभी ना बहुत बारिश होती है, थंडर होती है, लाइटनिंग होती है, और बारिश के बाद जब सूरज बाहर आता है तो कितना शांत होता है सब कुछ. इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो क्वाइट, इजंट इट? सो दिस इज द कंपैरिजन हियर, जहाँ पे पोएट कंपैरिजन करके बता रहा है कि क्लाउड्स भी सूरज के आगे शांत हो जाते हैं. When all is darkness, like the sad soul's night, and tempests lower with grief upon the hearts, affrighted nature sees thy forehead bright. The black storm furls his banner and departs. So, जब सब जगह पे अंधेरा होता है, okay, and we really feel very sad, बहुत मतलब we are really depressed हो जाते हैं या sad हो जाते हैं, तो उस टाइम पे also with the sunlight, okay, everything brightens up. So when all is darkness, like the sad soul's night, okay, and tempest lower like grief upon our hearts. So जब सब जगह पे अंधेरा होता है, डार्क होता है, ग्लूमी सा होता है, we feel very sad,
ओके यहाँ पे ये सारा अपने अंदर जो ग्रीफ है, सैडनेस है, उसकी बात हो रही है. ओके, अ फ्राइटेड नेचर सीज दाई फोरहेड ब्राइट. ओके, बट नेचर जो है वो सूरज को देखता है. ओके, उसके ब्राइटनेस को देखता है. एंड देन जो ब्लैक स्टॉर्म होता है, अंदर ही अंदर जो अंधेरा छाया होता है, जो एक स्टॉर्म होता है, अंदर ही हमारे मन के अंदर जो होता है, इट जस्ट फर्ल्स. ओके, हिज बैनर एंड डिपार्ट्स. वो बस वहाँ से निकल जाता है. एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड एंड ब्राइट. ओके, thou makes the rainbow with thy golden beams, span the blue ocean rolling at thy feet, set in the sky that arch of promise seems, like hope still distant and like hope still sweet. So, yes, after the rain, okay, if the sun comes out, फिर क्या होता है? Yes, हमें इंद्रधनुष देखने मिलता है. ओके, सो इट्स द रेनबो दैट वी सी. ओके, आफ्टर द रेन. तो ये रेनबो कैसे बनता है? इट इज बिकॉज ऑफ द गोल्डन रेज ऑफ सन जो आसमान पे आती है. ओके, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पैन द ब्लू ओशन रोलिंग एट द फीट. ओके, अब ब्लू ओशन को भी देखो. If you look at a sun setting, आपको ऐसे लगेगा कि sun is setting inside the ocean. Okay, it is just sparkling and glowing with the sunlight. Set in the sky, that arch of promise seems like hope still distant and like hope still sweet. So, जो लोग ऐसे sad हो जाते हैं या सोचते हैं कि I'm like, I have lost all hopes. बट जब वो देखते हैं कि येस देयर इज स्टिल होप, बिकॉज आफ्टर एवरी नाइट, ओके, आफ्टर एवरी डार्कनेस कम्स द ब्राइट लाइट. सो दिस लाइट इज नथिंग बट जस्ट एक होप है हमारे मन में. ओके, कि येस थिंग्स विल टेक टाइम, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड दैट होप इज अ स्वीट फीलिंग. Okay, and that hope we get because of the sun. Okay, because of the energy that we are getting from the sun. The flowers, the beauty of the earth implore, like women in distress, thy race to bring their beauty out of nothing and their store of scent and sweetness from their latent spring. So the flowers, okay, the beauty of the earth, it implores, it glorifies, it implores, it enhances. Okay, like women in distress, thy race to bring their beauty out of nothing. मतलब ये सारे जब फूल कब खिलते हैं? Especially during the daytime, in the presence of sun. Everything starts glowing, everything starts opening up. Okay, the sunflower जो होता है वो भी सूरज की दिशा से it moves around, isn't it? So it starts smiling. The leaves, they open up, they close down at sunset, they open up at sunrise. So nature में भी चीज़ें change होती रहती है with the sun. Okay, flowers bloom. रात को flowers close हो जाती है. Okay, but they bloom, they glow during the daytime in the presence of sunlight. Isn't it? So that's we are trying to say here over that it is like the sun is the main thing. Okay, हर चीज के सेंटर में जो भी हो रहा है दुनिया में, okay, जो भी नेचर में चेंजेस होते रहते हैं, it is all dependent on the sun. The flowers, the human beings, everyone, the animals, सब लोग sun पे dependent है. Okay, the forest green is of thy giving. Thou dost fling its emerald mantle over the earth. Prostrate to thee, let all creation bow, for all creation at thy word had birth. So, यहाँ पे we are saying that this forest green, जो हरियाली है आसपास जो भी है, वो किसकी देन है? It is given to us by sun. Yes, that's right. So those fling its emerald mantle over the green earth. So emerald का कलर भी क्या होता है? Green.
ओके, सो वी आर सेइंग ये नेचर, हमारी सृष्टि में जो हरियाली है, ऑल दिस ग्रीन थिंग्स ऑल अराउंड अस इन द नेचर इज ऑल थैंक्स टू गॉड. सो यहाँ पे द पोएट इज सेइंग दैट इवन दे बाउ डाउन टू हिम. ओके, वो भी नतमस्तक होके भगवान का, सूर्य देवता का शुक्रिया करते. ओके, फॉर ऑल क्रिएशन एट thy word had birth. क्योंकि बिकॉज ऑफ सन, ओके, creations, everything is created in the nature. We all know कि हमारे सर्वाइवल के लिए what do we need? We need oxygen. Okay, so how do we get that? वो हमें मिलता है प्लांट्स के जरिए. एंड प्लांट्स कैसे जिंदा रहती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे गेट देयर फूड. एंड फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, and that's when all these plants around us release करते हैं oxygen. Okay, and that's the gas that we breathe. So this is how, okay, sun plays a major role, and इसकी वजह से, okay, we have to be thankful to God. We have to be thankful to sun god because we are getting everything because of him. All right, now, O sun, the herald is the morning star, like fame preceding greatness. But when day comes on advancing with thy gilded car, heaven's host of wonder melt like sparks away. So, O sun, okay, so यहाँ पे the poet अभी sun से कह रहा है कि हे सूर्य देवता, thy herald is the morning star. So, आपका messenger जो है वो है morning star. और उसी की वजह से we get to see the day, like fame preceding greatness. Okay, so जैसे you know पहले तो हम लोग famous हो जाते, उसके बाद में हम great बन जाते. So that is what he is trying to say, that like fame, okay, fame preceding greatness. So it is like, fame, greatness, everything precedes one after the other because of the beauty of nature. Okay, because of whatever brightness and whatever energy जो हमें भगवान से मिलती है, and especially from sun god. Okay, but when day comes on advancing with thy gilded car, heaven's host of wonder melt like sparks away. So here he is just trying to compare, saying that ki everything is there throughout the day, and then as soon as the sun sets, okay, and it goes, and as the day progresses, okay, over throughout the period of the day, okay, so heaven's host of wonder melt like sparks away. So heaven's host कौन है of wonder? Yes, that is the sun god. He is the heaven's host, and he is creating wonderful things for us. Okay, it sparks away. Who shall declare thy glory? Unto thee my heart in fervent adoration kneels. Thou knowest whatever its suffering may be. To thee alone it tremblingly appeals. So he is saying ki, who shall declare thy glory? It is just a rhetoric thing, okay? ऐसे मतलब it's just a question that need not be answered. It's just something that is said in praise of God. Okay, who shall declare thy glory? Unto thee, okay, my heart in fervent adoration kneels. मतलब I bow down in front of you. Okay, मैं अपने घुटने पे आ जाता हूँ. I bow down in front of you in order to thank you for all the wonderful things that you have given us. Thou knowest whatever its suffering may be. To thee alone it tremblingly appeals. So जो भी sufferings है, जो भी है, you know what it is, and accordingly you give us that energy, that strength, okay, to deal with it. That is what the poet is trying to compare, okay, because you need to answer the questions of the exercise. All right, so first is the reference to context in which you will get a stanza. उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आपको उनके जवाब देने. ओके, देन यू हैव टू चूज द राइट ऑल्टरनेटिव्स. ओके, आपको ऑल्टरनेटिव से जो
परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है, उसको सिलेक्ट करना है. यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड थिंक एंड राइट. इन थिंक एंड राइट में यह आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है. ओके, ग्रामर स्टडी. चलो, लेट्स मूव ऑन टू ग्रामर स्टडी एंड सी what new thing are we going to learn in grammar, which is going to help us in our vocabulary. Okay, so imperative and quasi-passive voice. So that is what we are going to talk about. Now, what is imperative sentence? Imperative sentence is actually sentences which can be either an order or a request, okay, or a command. All right. Active and passive voices involve the use of transitive verbs. So, active passive voices में हम transitive verbs का इस्तेमाल करते हैं. So, object of the verb is compulsorily needed for the interchange of voices. So, जो object है उसकी ज़रूरत है voices को interchange करने के लिए, from maybe from an active voice to a passive voice या from a passive to active, उसके लिए हमें object की ज़रूरत होती है. Okay, so imperative sentences contain a latent subject you. So imperative में हम you word का इस्तेमाल नहीं करते because वो समझ में आता है कि that sentence is meant for you. Okay, या जिससे बात हो रही है उसके लिए. Okay, so imperative sentences begin with the verbs of action. ये direct verbs of action के साथ चालू होते हैं. Imperative sentences represent order, request or advice. Okay, now let's look at the request first. Request में क्या आता है? Present verb in the first form. Okay, V1 verb in the first form plus the object which is the active one. So यहाँ पे give me some bread. So give क्या है? Give is the verb, action. Okay, give me some bread. Bread क्या हो गया? यहाँ पे हो गया object. Okay, you are requested plus infinite of the verb plus remaining. तो अब हम इसको चेंज करेंगे into passive voice. तो क्या होगा? Active voice में हो गया clear cut, give me some bread. अब इसको हम जब चेंज करेंगे quasi passive में या passive में तो क्या होगा? You are requested to give me some bread. So यहाँ पे request की जा रही है for bread. Okay? Now order. Order में क्या आता है? Present verb, okay, plus object. Switch on the light. So यहाँ पे order में क्या आता है? Let आएगा. It will start with let plus subject, okay, which is the object plus be plus past participle, which is in the third form of verb. Okay, so यहाँ पे आता है let the light. Let plus subject, which is the light, be switched on. Okay, so switched verb in the third form. Okay, let the light be switched on. उसके बाद आता है advice. So present verb in the first form plus object. So help the poor. So यहाँ पे क्या होगा? Advice में subject आएगा. Okay, the poor plus should be plus past participle verb in the third form, which is this will be the case with the passive voice. So यहाँ पे आएगा helped. So the poor should be helped. Help the poor changes to the poor should be helped. Alright. Now we need to rewrite the sentences in the passive form and vice versa. Okay. So please close the door behind you. So यहाँ पे क्या होगा? You are requested to close the door behind you. Okay. Pass me the salt please. So यहाँ पे ये change होगा. ये भी request ही है. Okay. You are requested to kindly give me the salt. Okay. So likewise you have to do the rest of them. Now let's see what is quasi-passive. यहाँ पे हमने देखा active passive. अब हम देखेंगे what is quasi-passive. Quasi-passive is the sentence which contains a few transitive verbs with passive sense. It contains complement instead of object. It is formed by using verbs like test, taste, feel, read, smell, cost, sound and so on. So quasi-passive क्या होता है? It is the sentence
जिसमें थोड़े ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो विथ पैसिव सेंस, जिसमें पैसिव सेंस होता है। इसके साथ इट कंटेन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इंस्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट इज इन द क्वासी पैसिव सेंटेंसेस। एंड क्वासी पैसिव सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए वी यूज वर्ब्स लाइक टेस्ट, taste, feel, read, smell, cost, sound, and so on. Okay, so let's see the formation. Active sentence में आएगा subject plus present verb in the first form plus adjective or adverbs. So यहाँ पे the milk, this is the subject, smells, it's the verb in the first form, sweet is the adjective or the adverb here. Okay, now इसका पैसिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब्स प्लस व्हेन इट इज प्लस इज और एम और आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब इन द थर्ड फॉर्म. So the milk is sweet when it is smelt. So instead of just saying in the active voice the way we say the milk smells sweet, यहाँ पे वो change होगा, the milk is sweet when it is smelt. So let's try the exercise once. The bed feels soft. Okay. So यहाँ पे क्या आएगा? The bed is soft when it is felt. Okay. The rose smells sweet. The rose is sweet when it is smelt. Okay. Your composition reads well. Okay. Your composition reads well. So यहाँ पे क्या आएगा? Your composition is well when it is read. Alright. So children likewise do the rest of them. अब आते हैं word study पे. Now this poem contains a rhetoric question. Okay, such a question is used to emphasize a point or draw the attention. Write the sentences in assertive form. One is done for reference. So, जैसे rhetoric question आया था वैसे ही हमें और भी sentences मिले हैं जिनको आपको you have to change it to the assertive form. Okay, isn't it a beautiful day outside? So, इसका assertive form क्या होगा? It is surely a beautiful day outside. Who doesn't love a good movie night? We all love to go out for a good movie night. Okay? Why would anyone want to miss out on this opportunity? Nobody would like to miss out on this opportunity. Okay? So, like this, you have to do the remaining ones. उसके बाद you have to complete the sentences, okay, providing predicates. So, आपको इसके आगे ये subjects है, उसके आगे अपनों आपको predicates लगाने. Alright? The sun is the brightest star. Alright? So, likewise, you have to do the remaining. Listening time. You have to listen to the passage and state whether the given statements are true or false. So, passage को है आपको पढ़ना है और बताना है sentences true है या false है. Okay. The gentleman was spinning the walking stick round and round in his hand to drive away the dogs. The gentleman was walking along a busy road. The man walking behind praised his action. The gentleman thought that he had the right to do whatever he liked, and we can enjoy our rights and freedom even if they interfere with other people's rights and freedom. So एक पैसेज दिया गया है, उसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए ये ट्रू है या ये जो स्टेटमेंट्स लिखी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है. ओके, नाउ स्पीकिंग टाइम. Individual student will draw and write on the significance of liberty in our life. Liberty मतलब freedom and society. Relate your liberty to the values of society. Your writing should not be more than 100 words for speech. तो आपको एक speech लिखना है जहाँ पे आप significance of liberty, okay, in our life and society के बारे में बात करोगे. Alright, so आपको आपके सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, जो कस्टम्स हैं, जो भी certain rules that we need to follow, okay, in order to live a peaceful life, उसके बारे में आपको emphasize करना है.
Alright, now writing time में you will write an email, okay, जिसमें you are Ravi or Sukriti. Your niece has decided to give up her studies in favor of a clerical job as she feels she cannot afford to pay for her studies. Write an email urging her to continue her studies and pursue her dreams. So आपकी cousin है, आपकी niece है जिसको पढ़ाई छोड़ के जॉब करनी है बिकॉज उसको लगता है कि शी कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर हर स्टडीज. सो आपको ईमेल लिख के उसको कन्विंस करना है दैट शी मस्ट कंटिन्यू विथ हर स्टडीज. Alright, so children, you already know by now how to write an email and I'm sure you will write a wonderful email जहाँ पे आप उसको अच्छे से convince कर पाओगे. But before you get on to the activities, you know what you have to do, right? आपको सबसे पहले तो poem को reread करना है. Okay, understand, okay, what is being told about the sun god, so in such detail. Be thankful to sun god, answer all the exercise questions. ग्रामर में आओ. एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में हमने जो भी सीखा है, क्वासिव पैसिव वॉइस के बारे में, उसके बारे में आपको रीड करना है फिर से. एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द एक्सरसाइजेस एंड देन यू कैन टू गेट ऑन टू अदर एक्टिविटीज. ऑलराइट चिल्ड्रन, so get going.